अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही प्यारी वीडियो दिखाने वाला हूँ कि सुन्नी जो है वो शिया से शादी कर सकता है कि नहीं। तो आइए दोस्तों, पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर हम इस पर बात करते हैं। Issa says, what is the ruling on a Sunni man marrying a Shia woman? Shia are not all alike. Some of them are Muslims like us, but they have a problem in the hierarchy of the Muslim caliphs. So they say, we love Abu Bakr, we love Umar, but we love Ali more than we love Uthman. And this is how they should have ruled. Some of them go a little bit extreme. And they say that Ali is better than all of the other three. Some go way too extreme when they curse Abu Bakr and Umar and Uthman and the rest of the companions, all of them, except a handful of companions such as Ammar ibn Yasir, Salman al-Farisi, etc. Some even go further to slander Mother Aisha and accuse her of zina and being among the people of hellfire, as Hafsa, the mother of the believer as well, the daughter of Umar ibn Khattab. So you can't paint them with the same brush. But the vast majority of Shia who are now known to be the Shia are those from Iran, those who are following the Imamiyya or the Ithna Ashariya or Al-Ja'fariyya Aqidah. And these have strong issues. According to our Aqidah as Ahl Sunnah wal Jama'ah, we can't nullify a person's Islam without concrete proof. So, as we are not talking about a specific individual, we're talking about a belief. This is easier. So we can easily say that anyone who slanders Mother Aisha and says that she committed fornication or adultery, and by that he would be falsifying the Quran where Allah proved her innocence in the Quran in Surah An-Nur, such a person is a kafir for rejecting the Quran. So all those who curse Abu Bakr, Umar, Uthman and the rest of the companions, they're actually cursing the religion they conveyed to us. And they are falsifying the hadith where the Prophet said that they are all in Jannah. So such people, it's definitely not permissible for a Sunni Muslim or for any Muslim to marry from. These are apostates, blatant kafir, disbelievers. Now we get people coming to us and say, Sheikh, the woman I want to marry doesn't curse the companions, and she does not slander Mother Aisha. The only thing that differs with us is that she follows the fiqh of Al-Ja'fariyya, which is different than ours. And in terms of Aqidah, she loves Ali, Al-Hasan and Hussein. Okay, we all love them. Yeah, but she prefers them more than the rest. But she respects the rest and says that they are companions of the Prophet ﷺ. So, in short, that individual is a Muslim. However, marrying a Shia with such a belief would negatively impact your children, because she sits with them more than you. And not only that, their uncles, maternal uncles and aunts would be from the Shia. So they will have feelings towards Shia. And the worst thing of all is if she's using taqiyya, which is lying in order to protect their beliefs, as it is part of the beliefs of the Shia. And she's saying this to you so that you get married to her, and then she shows
her other face. This is even the worst of all. So in short, I would say that it is not permissible to marry someone from the Shia sect due to what you have heard earlier, and Allah Azza wa Jal knows. जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। जैसे कि आप लोगों ने ये मसला जो है ये भी सुना है कि एक सुन्नी जो है वो शिया के साथ शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता। बहुत बेहतरीन बयान था दोस्तों। अगर आप लोगों ने देखा हो तो इसमें जो है फ़िरक़इयत का बहुत फ़र्क आता है दोस्तों। आजकल जो शिया सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो ईरान में पाए जाते हैं। दरअसल दोस्तों इसमें फ़र्क ये है कि ये इमाम जाफरी की पैरवी करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये सबसे ज़्यादा जो अहमियत देते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देते हैं कि ये अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है वो सबसे बड़ा है। और फिर जो है दोस्तों ये हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुरा भला भी कहते हैं। और अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह दोस्तों, ये वही लोग हैं दोस्तों कि ये फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को भी बुरा भला कहते हैं। वो यही कहते हैं, ये लोग यही कहते हैं कि वो जहन्नमी है, वो जहन्नम में जाएगी। जबकि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए जो आयात कुरान मजीद में आए हैं दोस्तों, अल्लाह ताला ने खुद बयान किया है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मासूम है। फिर ये लोग कैसे कह सकते हैं दोस्तों कि ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है वो जहन्नमी है? अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, कैसे कह सकते हैं आप दोस्तों? तो फिर कैसे जो है एक सुन्नी जो बंदा है वो शिया से शादी कर सकता है दोस्तों? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये सोच लें, अगर सुन्नी जो है वो इनके साथ शिया के साथ शादी कर भी ले तो दोस्तों ये कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे? इनके बच्चे कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे? क्या अपनी माँ जो है वे इनसे अपनी मज़हब छुपाएगी? अगर ये बाप से भी अपना मज़हब छुपाएगी, ये अपने बच्चों को तालीम भी देगी, तो क्या वही बाप के जो रिश्तेदार इनके सामने नहीं आएंगे? क्या ये बाप के जो रिश्तेदार हैं उनकी जो असलियत है इनके सामने नहीं आएगी? तो वो अपने बच्चों की और खुद की ज़िंदगी ऐसे तबाह बर्बाद कर देगी। तो दोस्तों अगर सोचा जाए तो क्या इनके साथ जो है वो दोस्ती हो सकती है? जबकि ये लोग वही लोग हैं दोस्तों, शिया लोग वही लोग हैं जो कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा भला कहते हैं। जबकि यही वो लोग हैं दोस्तों कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे। वही दोस्त थे जो कि हर टाइम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही होते थे। जब कभी भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं भी जाते थे तो यही दोस्त उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इनके साथ ही होते थे दोस्तों। फिर यही वो लोग हैं कि इन असहाबा को जो है वो बुरा भला कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोस्तों के बारे में फरमाया कि यही वो दोस्त है जो कि जन्नती है। दुनिया में इनको जो है वो पैगाम पहुंचा दिया गया है कि यही वो दोस्त है मेरे कि जो है ये जन्नती है। फिर यही जो शिया लोग हैं ये इनको जो है क्या करते हैं दोस्तों, इनको बुरा भला कहते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर कोई भी शिया लोग हैं वो किसी सुन्नी को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कि नहीं हम जो है वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को भी सही मानते हैं, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी मानते हैं, हज़रत उस्मान को भी, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी मानते हैं, और जब शादी हो जाती है तो बाद में जब इसकी असलियत का पता चलता है तो बाद में सब कुछ ख़त्म हुआ होता है दोस्तों। फिर जो है आपका भी ईमान ख़राब होगा, आपकी ज़िंदगी भी ख़राब होगी। तो सबसे पहले दोस्तों सोच समझ के आप लोगों ने फैसला लेना चाहिए। इनके साथ जो है वो शादी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि दुनिया में पाए जाते हैं दोस्तों, बाइलम लोग होते हैं, लेकिन यही तो वो लोग कहते हैं कि हाँ बच्चे लोग हैं, मुसलमान नाम के तो मुसलमान, लेकिन सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं हैं दोस्तों। इनको हम कैसे मुसलमान कहते हैं जब ये लोग हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पे इल्ज़ाम लगाते हैं, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा भला कैसे कहते हैं दोस्तों, जबकि उनको दुनिया में जन्नत का पैगाम पहुँचा दिया गया है। फिर ये कैसे मुसलमान हो सकते हैं दोस्तों? अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ताला किसी को इन लोगों से बचा के रखे दोस्तों। तो दोस्तों यही वजह है कि दुनिया में आजकल जो है बहुत सोच समझ के हमें रिश्ते करने चाहिए, और सुन्नी और शिया का जो रिश्ता है ये कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बाइलम लोग होते हैं, उनको वो अपनी बेटियां दे देते हैं, अपनी बहनें उनको दे देती है कि ये सिर्फ सही है, नाम के तो मुसलमान, सिर्फ नाम के तो मुसलमान नहीं है ना, इनका जो मज़हब चेक करिए, मज़हब के नाम पे किस रवायत से ताल्लुक़ रखते हैं, किस रवायत से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। फिर इनकी छानबीन करें, फिर जो है इनके अपनी बेटियाँ और बहनें दें। तो
اور کبھی بھی دوستو یہ اپنے ذہن میں یہ بات نوٹ رکھے، آپ نے یہ بیان بھی سنا ہے، بہت بہترین بیان تھا کہ کبھی بھی سنی اور شیعہ کی شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، ان کے درمیان بہت بڑا اختلاف ہے دوستو، یہی اختلاف ہے جس کے بہت ایک اللہ تعالیٰ اپنے خود کہتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ معصومیت بیان کرتا ہے، پھر یہی لوگ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بولا بالا کہتے ہیں۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ بیان آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، بہت بہترین بیان تھا، اور دوستو امید کرتا ہوں کہ اب وہی معلومات آپ لوگوں کو ملے ہوں گی جو کہ آپ لوگوں نے نہ کبھی سنی ہے اور نہ کبھی دیکھی ہو۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کے ذہن میں کوئی بھی شک و شباب ہو کہ سنی شادی کی شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ بہت بہترین بیان آپ لوگوں کے لیے لائے۔ تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی قیمتی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ والسلام۔